Hello, dear students. A very good morning to all. How are you? I hope you all are fit and fine. Dear students, open your social course book. पेज नंबर है आपका 38. The four main objectives of India as a country. The preamble lists four main aims which are to be achieved by India for all its citizens. इसके सभी नागरिकों के लिए justice, the citizens of India cannot be treated unequally because of difference in their caste, religion, gender, being man or woman, income उनकी आय के लिए and wealth. Government should work for the welfare of all, especially the poor, especially किसके लिए? The poor and the weaker groups. And the weaker groups, कमज़ोर वर्ग के लिए. All adult citizens of India have the right to elect their leaders to get elected in elections on the basis of their abilities. Liberty of freedom. The citizens of India are free to speak their mind and write their thoughts. They are also free to follow any religion of their choice. The government should promote the freedom to think, read, write, speak and follow any religion among the people of India. Equality. All citizens of India are equal before the law. The government should end all kinds of inequality present in our society, such as inequalities between boys and girls, the rich and poor. इनइक्वालिटी किन किन के बीच में? बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों के बीच में, एंड रिच एंड पुअर, कास्ट एंड रिलीजन. The government should provide equal opportunities to all to develop. नेक्स्ट पेज नंबर ओपन करेंगे. नेक्स्ट हमको पेज नंबर 39 में लेट्स ट्राई टू कंप्लीट करना है. लेट्स ट्राई टू में आपको क्वेश्चन 2 में राइट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. व्हाट डू यू, एक क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रियम्बल? द वर्ड मीन प्रियम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन. बी क्वेश्चन है इसका, डिस्क्राइब द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इट मोर देन 3 sentences. The preamble is an introduction to the rest of the constitution. It describes the nature or features of India as a country and the aims India wants to achieve. Explain the following. इनको explain करना है. Serbian country, it is a free country whose people have full right to take decision on all matters related to their country. नेक्स्ट है आपका सोशलिस्ट कंट्री, द कंट्री इन विच द वेल्थ प्रोड्यूस्ड इज शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी. अ सेकुलर कंट्री, अ कंट्री इन विच द गवर्नमेंट डज नॉट गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी रिलीजन and people of all religions have equal rights. नेक्स्ट है आपका फोर्थ, a democratic country, a country in which all the adult citizens have the right to choose their leaders. democratic का मीन्स क्या है? a country in which all the adult citizens have the right to choose their leaders. a republic, a country which has elected head instead of a king or a queen, called a republic.
सो डियर स्टूडेंट्स, आपको लेट्स राइट टू एक्सरसाइज पेज नंबर 39 की अपनी नोटबुक में राइट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।